Hello students, how are you? I hope that all of you have completed your exercise 3.3. Now we are coming to exercise 3.4, and this exercise is based on using elementary transformation find the inverse of a matrix. How to find inverse using elementary transformation method. इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सर्टेन बेसिक्स आर देयर, कुछ बेसिक्स हैं, पहले वो आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिसेस, किस टाइप की मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। Now I think this concept is clear to you. Square matrices, in previous video I have told you what is a square matrix. Inverse उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। इनवर्स नेवर एग्जिस्ट फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो बिफोर फाइंडिंग द इनवर्स What kind of matrix is required to find the inverse? किस टाइप की मैट्रिक्स चाहिए हमको इनवर्स निकालने के लिए? That means it must be a square matrix. Square matrix होनी चाहिए, first thing. Second thing, every square matrix does not cause inverse. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, फिर भी उसका इनवर्स नहीं आ रहा है। कुछ कंडीशंस हैं, देयर सर्टेन कंडीशंस दैट वी हैव टू नाउ डिसाइड हियर व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर a square matrix. Its determinant should not be equal to 0. ये कंडीशन डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। If it is a square matrix, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है and determinant is equal to 0, अगर उसके determinant की वैल्यू 0 आ रही है, inverse will not exist. यहां पर inverse exist नहीं करेगा, इस बात पे ध्यान दें। No doubt it is a square matrix, ये square matrix है और उसका अगर determinant 0 आ रहा है तो inverse exist नहीं करेगा। ठीक, ये कंडीशन हमें क्लियर होनी चाहिए, किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और किसका नहीं करेगा। अगर हम ये मेथड यूज करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, इसमें इन प्रीवियस वीडियोस आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स का बताया था मैंने। अगर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रो, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 3 5 0 0, ये एक मैट्रिक्स है। दिस रो सेकंड इज 0, रो सेकंड के एलिमेंट 0 है। नाउ सी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रो और ए पार्टिकुलर कॉलम आर इक्वल टू 0, देन इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स नहीं निकलेगा इसका। इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 2 into 2 ऑर्डर का, ये हमने डिटरमिनेंट ए लिखा, इसका इंटू इससे 3 into 0 0 एंड माइनस 0 into 5, अगेन दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट्स डिटरमिनेंट बिकम 0। अभी मैंने जस्ट आई हैव टोल्ड यू, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, नो डाउट इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स शुड बी a square matrix and its determinant should not be equal to 0. इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और डिटरमिनेंट a 0 के इक्वल नहीं होगा। जो दूसरा मेथड हमारा इनवर्स निकालने का वो होता है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन। ये हम डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से इसका हमें इनवर्स निकाला जाता है, इस मेथड से। दिस अनदर मेथड to find the inverse of a matrix, but here we have to use elementary operation, means we have to
operations in the elements of a row or a column. So there are two methods. There are two methods. Try to understand. In elementary operation method, there are two methods to find the inverse. दो methods हैं inverse निकालने के लिए. One is elementary row method, or we in short call it elementary row method or elementary row. If transformation we are writing, so elementary row transformation you will write T, or if we are using elementary row operation, we can write it ERO, elementary row operation. Second is elementary column method or elementary column transformation or elementary column operation. Two methods, दो मेथड है, एक एलिमेंट्री रो मेथड है, एक एलिमेंट्री कॉलम मेथड है. बट द रिजल्ट फ्रॉम बोथ द मेथड्स आर सेम ऑफ इनवर्स. ये नहीं कि हमने कॉलम मेथड लगाया तो इनवर्स की वैल्यू कुछ और आ रही है. वी आर फाइंडिंग अ डिफरेंट वैल्यू, एंड व्हाइल वी आर यूजिंग दिस रो मेथड वी आर गेटिंग अ डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम मैट्रिक्स. इट विल नॉट बी लाइक दैट. Out of these, anyone you can use and you can find the inverse of a matrix. Now try to understand. So these two methods are there in elementary operation. There are 6 operations, means transformation, the 6 operations. 3 for rows and 3 for columns. Total operations are 6 in number, and out of these 6, 3 are for rows and 3 are for columns. ये 6 ऑपरेशन बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक ऑपरेशन डबल हो जाता है. वही सेम ऑपरेशन रो के लिए यूज करते हैं और वही सेम ऑपरेशन हम कॉलम के लिए यूज करते हैं. तो फर्स्ट जो इसका है वो ये है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और any two columns. पहला आप लिखें इसके लिए interchange of any two rows or columns means two columns. मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे हम इंटरचेंज करेंगे. दिस सिंबल इज यूज फॉर इंटरचेंज. ये सिंबल यूज करते हैं इंटरचेंज के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We know that this is row first, this is row second, and this is row third. Horizontal, they are rows. First of all, I am making clear for rows, and the same will be used there for columns also. This symbol is used for interchange. This is row first, this is row second, this is row third. Here I have written R1 interchanges R2. ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान समझिए क्योंकि ये मेथड आप पहली बार देख रहे हैं. R1 interchanges R2. This implies here that in place of R1 we have to write R2, and in place of R2 we have to write R1. तो इसके बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, सेम मैट्रिक्स जहां पर हमने R1 लिखा हुआ है, ये रो फर्स्ट लिखी हुई है, यहाँ पे हमें रो सेकंड लिखनी है 4 5 6. जहां पे रो फर्स्ट लिखी सेकंड लिखी हुई है वहां पे रो फर्स्ट लिखना है, एंड रो थर्ड कुछ नहीं किया हमने. वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन रो थर्ड. रो थर्ड विल कम एज इट इज 7 8 9. जस्ट सी द कंडीशन. Interchange of any two rows or any two columns. If
2 into 2 order. B matrix we have taken 1, 5, 2, 6 R1 interchanges R2. Again for a 2 into 2 order, make it clear. That means B is equal to 2, 6 will be here and 1, 5 will be here. 2, 6, 1, 5. This is the value after changing, interchanging. So interchange of any two rows or any two columns. Now try to understand. Same example I am giving now here for columns. Matrix we have taken same. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Column, this is first column C1, this is C2, this is C3. We have written C1 interchanges C2. This means the elements which are written in first column, they will interchange their places with the second column. After interchanging, we will get a matrix of order 3 into 3 and that will be 2, 5, 8. 1, 4, 7, 3, 6, 9. Third column will remain as it is. Now it is not necessary. You can change row 1 interchanges row 3. ये जरूर नहीं कि मैंने row 1 row 2 को ही करना तो कोई मेथड है. Any two rows R2 interchanges R3. R2 into R3 में क्या होगा? R3 के एलिमेंट्स R2 की जगह लिखे जाएंगे, R2 के एलिमेंट्स R3 के लिखे जाएंगे, रिप्लेस हो जाएगा, इंटरचेंज करना है. ऐसे यहाँ पे C1 इंटरचेंजेस C2. ये कॉलम की हम बात कर रहे हैं. ये पहला ही प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, पहली ट्रांसफॉर्मेशन वाली ऑपरेशन क्या है. इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स. ठीक, हमने एक और एग्जांपल लिया B फॉर कॉलम्स. ये हमारे पास रो में था 1, 5, 2, 6 लिखा था. इसको हमने इस तरीके रो ऑपरेशन शो किया था 1, 5, 2, 6. अब इसका हम कॉलम ऑपरेशन शो करते हैं. दिस इज कॉलम फर्स्ट, दिस कॉलम सेकंड. C1 इंटरचेंजेस C2, ये किया हमने. और B मैट्रिक्स को नाउ वी हैव रिटन 5, 6, 1, 2. Second column becomes first column and first column becomes second column. So this is interchange of any two rows, this operation. Now I hope that it's clear to everybody. I have given example of 3 into 3 matrix, 2 into 2 matrix, how will interchange the rows. Here I have given you example of 3 into 3 matrix of interchanging of columns. Again here it's an example of 2 into 2 order matrix of interchanging of columns. Now write down all this interchange of any two rows. Then after this we will come to next property and means next. So it deals with two operations. Try to understand. One for row, one for column. Now next we are writing. Second property is multiplication property. Multiplication property deals multiplication of the elements of any row or a column by a non-zero scalar. Multiplication, second operation. All of you write down multiplication. In this property, we have to multiply any row or a column by a non-zero scalar. By a non-zero scalar means zero नहीं होना चाहिए. Non-zero scalar से उससे हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So multiplication of the elements of any row or column by a non-zero scalar, multiplication of elements of any row
Any row means any row you can use first, second, third. Any row or column means any column by a non-zero scalar. The second property, by a non-zero scalar. Now again I am giving you example by taking a matrix of order 3 into 3 and a matrix of order 2 into 2. Try to understand. पहले मैं रो के क्लियर करूंगा, फिर आपको उसी ऑपरेशन में कॉलम के क्लियर करूंगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन की स्टाइल। क्योंकि ये आपके बिल्कुल थोड़ा टॉपिक हटके है तो इसको बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स A and its value is 2, 3, 1, 1, 5, 2, 4, 3, 6. This is row first, this is row second, this is row third. हम लिखा R2, this shows 2R2. यहां पर R2 तो 2 का R2 से इंटू किया है, जो रो यहां लेंगे वही यहां होना चाहिए। ये नहीं R2 दिस शोज 2R3। अब 2 का R2 से हम इंटू कर रहे हैं तो इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। आफ्टर दिस वी आर गेटिंग 2, 3, 1। 2 का इंटू किया इस 1 से, दैट इज 2। 2 का इंटू 5 से किया, दैट इज 10। एंड 2 का इंटू 2 से किया, दैट इज 4। अगेन 4, 3, 6। फर्स्ट एंड थर्ड रो विल रिमेन एज इट इज, यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज फर्स्ट और थर्ड रो। क्योंकि देखिए हमने ऑपरेशन किस पे लगाया है, मल्टीप्लिकेशन किस पे लगाया है, सेकंड रो से। एलिमेंट्स विल चेंज ओनली ऑफ सेकंड रो। फर्स्ट एंड थर्ड रो विल रिमेन एज इट इज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 into 3 order. Now I am giving you another example of 2 into 2 order. B is equal to 1, 2, 3, 4. R1, this shows 5R1. R1 means first row का हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So B is equal to, after multiplying, the matrix will be equal to 5, 10, 3, 4. So try to understand multiplication of elements of any row. Any row. Here we have taken row second. In this case, you can take row third also. You can take row first also. Here again, with row first we have taken, you can take with row second also. For the case of column, for example A. Now we are dealing with the column case. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2. C2, this shows 2C2. C2, this is first column, means as it is no change. The value of second column will change only, and third column will be as it is. So A is equal to 1, 4, 1. Column second, 2 2s are 4, 2 1s are 2, and 2 1s are 2. Third column will be as it is 3, 2, 2. It's an example of 3 into 3 order. And same condition we are using for this column. Now 2 into 2 order for column, B matrix is equal to 1, 3, 2, 4. C1, this shows 3C1. 3C1 means 3 is multiplying with each element of column first. We'll get a matrix and this will be equal to B matrix. After applying this, we are getting 3,
6, 3 and 4. This is the value of B matrix after using this property. C1, this implies 3C1. Means 3 is multiplying with C1, means elements of this first column, and the matrix which we are obtained there is this one. तो फर्स्ट केस में मैंने बताया था इंटरचेंज में दो आपकी प्रॉपर्टीज हो गई थी, मतलब कहना का एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में भी अगेन 2 हो गई आपकी, 1 फॉर रो एंड अदर फॉर कॉलम, दैट मीन्स 2 and 2 4 हो गई। अब ना थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपकी आ रही है एडिशन प्रॉपर्टी। इसको आप नोट करें, नोट करने के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको एडिशन प्रॉपर्टी। तीन ही प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इंटरचेंज, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इन तीन के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चंस जो होंगे मैं ट्रिक बताऊंगा, टैक्टिक दूंगा किस तरीके से करने हैं। वैसे मैं क्वेश्चन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से 3-4 मेथड से भी निकाल दूंगा, लेकिन वो कई बार ऐसा होगा कि आप लोग उतना नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक आई विल गिव यू हाउ टू फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उससे आप निकालेंगे, हर क्वेश्चन आप इजीली निकाल लेंगे। नाउ थर्ड ऑपरेशन, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। Right to understand, addition to the elements of any row or column, the corresponding elements to any other row or column multiplied by any non-zero number, multiplied by any non-zero number. Now try to understand, मैं आपको पहले रो का क्लियर करता हूं, उसके बाद कॉलम का क्लियर कर रहा हूं आपको कैसे। For रो के लिए A is equal to, we have taken 1 2 1 3 1 2 2 2 1, ठीक। Now rows and columns are clear to you। पहले मैं रो की प्रॉपर्टी क्लियर कर रहा हूं। इसमें क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने लिखा R1, this implies R1 plus 2R3। R1 तो यहाँ R1, ध्यान रखना, यहाँ R1 तो यहाँ R1, ऐसे यहाँ R1 कर देना, R2 कर देना। बहुत से बच्चे कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। चेंज किस में हो रहा, R1 में हो रहा है। चेंज इज ओनली इन फर्स्ट रो, सेकेंड एंड थर्ड रो विल रिमेन एज इट इज। सो आफ्टर implying this we are getting रो फर्स्ट के 2 into R3, 2 का इस रो 3 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और ये एडिशन इसका कॉलम वाइज है इस तरीके से। 1 का इंटू 2 से इंटू क्या पे 2 into 2 4 को हम 1 में ऐड करेंगे। पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे रो के सारे एलिमेंट से, फिर हम ऐड करेंगे इससे। तो 2 का इंटू किया पहले हमने इससे 4 हो गया, और इसमें ऐड करेंगे तो 1 + 4 दैट इज 5। क्लियर हुआ 5 कैसे आएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 इज हियर, 2 की वैल्यू चेंज होगी, वो रो फर्स्ट की होगी। 2 इज हियर, अगेन मल्टीप्लाई इट बाय 2, 2 2 is 4, 4 plus 2 that is 6। now see 1 is here and 2 will multiply with this, अब 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 into 1 2, 2 plus 1 that is 3। तो रो फर्स्ट की वैल्यू केवल चेंज होगी। सेकेंड एंड थर्ड वी विल राइट इट एज इट इज 3 1 2 2 2 1। अब समझे आप, द एडिशन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें हमने ऐड किया। ये 2 into 2 ऑर्डर का आपको हमने बताया, सॉरी 3 into 3, इट्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर, नॉट 2 into 2 ऑर्डर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 2 into 2 ऑर्डर। 2 into 2 ऑर्डर का आप देखिए, हमने मैट्रिक्स बी लिखा और इसको हमने लिखा 1 2 5 6। हियर वी आर राइटिंग R2,
this shows R2 plus 3R1. रो सेकंड इसकी वैल्यू चेंज होगी, इस रो की वैल्यू विल चेंज ओनली ऑफ दिस रो. रो फर्स्ट विल रिमेन एज इट इज. रो फर्स्ट वैसे की वैसे लिखेंगे. आफ्टर दिस यूजिंग दिस वी आर गेटिंग B is equal to फर्स्ट रो एज इट इज 1 2, कुछ नहीं करना हमको. रो सेकंड में 3 का इंटू रो फर्स्ट से करना, 3 का इंटू यहां भी करना, 3 का इंटू यहां भी करना और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इधर ऐड करना है. तो 3 का इंटू से क्या 3 और 3 इंटू 1 3 प्लस 5 दैट इज 8. इस तरीके से 8 आएगा. नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी हाउ वी आर डूइंग, हम कैसे कर रहे हैं. Now 3 will multiply with this 2, 6, and 6 plus 6 will give you 12. So this is the case of 3 into 3 matrix and this is the case of 2 into 2 matrix. And we have applied this only in row. Now we are going to apply the same in column. Now we are going to apply same in column. For example, matrix A is equal to 1 1 2 2 1 3 3 1 2. C1, this shows C1 plus 3C2. C1, this shows C1 plus 3C2. C1 में इस कॉलम फर्स्ट में केवल चेंज होगा 3 का इंटू कॉलम सेकंड के एलिमेंट से, इससे सबसे मल्टीप्लाई करना है. ऐड किस में करना है, कॉलम फर्स्ट में ऐड करना है. दैट मीन्स वी गेट द चेंज वैल्यू ऑफ कॉलम फर्स्ट. A इज इक्वल टू C1 एज इट इज में ऐड करेंगे 3C2. 3 का इंटू इससे किया, अब रो वाइज ऐड होता है. 3 का इंटू इससे किया हमने C2 से 3 प्लस 1 ये हो गया 4. ना सी या फिर हमने 3 का इससे इंटू किया 3 प्लस 2 दैट इज 5. फिर हमने 3 का इंटू इससे किया 3 और C1 में ऐड किया. C1 दैट इज 3 इंटू 3C2. 3 का इंटू यहाँ C2 से किया 3 प्लस 3 दैट इज 6 ही होगा. अब सेकेंड विल एज इट इज 1 1 1 एंड थर्ड विल एज इट इज 2 3 2. Now I think it's clear to you किस तरीके से हमने ये कॉलम सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर कॉलम सेकंड के एलिमेंट से कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट से फिर हमने इसको ऐड किया और चेंज होने के बाद हमें ये नया मैट्रिक्स दिया. तो ये हमने कॉलम की प्रॉपर्टी यूज की है. यहाँ इन दोनों में हमने रो की यूज की थी क्योंकि दोनों में डील कर रहे हैं एनी रो और कॉलम. अब देखिए ये 3 into 3 ऑर्डर का था. अगर हम 2 into 2 ऑर्डर का चाहते हैं, we want for 2 into 2 order, suppose we have taken a matrix B and matrix B is equal to 1 1 2 5. Again C1, this shows C1 plus 2C2. C1 फर्स्ट कॉलम में 2 का इंटू किया C2 के अंदर और ऐड किया. वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू C1 की वैल्यू चेंज हुई. अब 2 का पहले C2 से इंटू 2 2 4 4 प्लस 1 दैट इज 5. अब 2 का 1 ये हमें ऐड करना C1 की में और 2C2 वैल्यू कितनी है 5. 2 5 is 10 प्लस 1 11 and 2 and 5 as it is. No change in column second. फर्स्ट के अंदर तो ये हमारे 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हमने कॉलम मेथड जो यूज किया है इसके साथ वो हमने क्लियर किया. यहां पर 2 into 2 3 into 3 रो क्लियर किया, रो मेथड. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के अंदर यू कैन यूज आइदर कॉलम मेथड और रो मेथड. अब देखिए ध्यान से समझिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली.
व्हाट वी हैव टू डू, यू प्लीज राइट डाउन दिस, इसको आप नोट कर लें किस तरीके से कहां पे हम मल्टीपल करके कैसे है, किसी को भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज कंडीशंस वेरी वेल। फर्स्ट मैंने कहा बेसिक क्लियर कर रहा आपको, बेस कि किस तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करें। जैसे R1 लिखा, R1 दिस टू R1 प्लस 2 R3, तो 2 का इंटू केवल R3 की ही एलिमेंट से किया, रो थर्ड से, रो सेकंड से नहीं किया। ये आपको बहुत ध्यान से सोचना है, समझना है, जिससे कंडीशन लिखी उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है। तो ये हमने यहाँ रो में ऑपरेशन लगाया था, यहाँ कॉलम में ऑपरेशन लगाया था, आप लोग इसको नोट करें। फिर मैं आपको नेक्स्ट इसके आगे बताता हूँ मेथड कैसे आप निकालेंगे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से। नोट करें आप लोग इसको। Now see, for row operation, if A is any matrix, ये रो ऑपरेशन की बात सुन रहा हूं। रो के लिए हम क्या करते हैं, ये हम लिखा, कॉलम के लिए क्या करना है हमें। A is any matrix, A कोई मैट्रिक्स है and it is a square matrix, square matrix A is equal to I into A। अब जब ध्यान से समझे आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस I को यहां लगा देते हैं, ये कॉलम के लिए अप्लाई होता है। फॉर दिस इफ यू आर यूजिंग कॉलम मेथड देन राइट A is equal to A into I। ट्राई टू अंडरस्टैंड, I into A will give you A। आप इसको चेक करें, A आप कोई मैट्रिक्स ले ऑफ 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर। अगर आप A 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ले रहे हैं, मैं भी आपको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। I मैट्रिक्स विल बी ऑफ दैट ऑर्डर, I भी उसी ऑर्डर का होगा, 2 into 2 ऑर्डर का। I का फिर हम A से इंटू करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ A ओनली। A मैट्रिक्स की वैल्यू ही मिलेगी। If you want, I can show you. Let us take matrix A is equal to 1, 2, 3, 4. Now see, and matrix I, this is of order. When this matrix A we have taken, it is of 2 into 2 order. Then here we have to take I of 2 into 2 order, 1, 0, 0, 1. We know this is I into A. I into A, their product will be equal to 1, 0, 0, 1. With this matrix A, 1, 2, 3, 4. 1 into 1, now we are multiplying. 1, 0 into 3, that is plus 0. 1 into 2, that is 2, plus 0 into 4, that is 0. Again 0 into 1, that is 0, plus 1 into 3, that is 3. 0 into 2, that is 0, plus 1 into 4, that is 4. Now this becomes 1, 2, 3, 4. And this is equal to matrix A only. Here also you can use, you will get it will be equal to A only. देखिए मैंने इसलिए आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर if we are taking A of 3 into 3 order, then we have to take this I matrix of 3 into 3 order, that is 3 into 3 order of I think all of you know it very well, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. If you multiply A matrix with this I matrix, you will get the value of A matrix. That means AI or IA is equal to A only. ये कॉलम के लिए हमने A into I लिखा। अब हमें कोशिश क्या है ना, what precaution we have to take if we are using row operation। अगर हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हमें किस बात पे विशेष ध्यान देना है, या कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो what are the basic things that we have to do it very carefully, and those things should be in our mind।
अब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर जो मेन बात आती है वो ये आ रही है, द ऑपरेशन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस मैट्रिक्स ए, जो इस मैट्रिक्स ए में ऑपरेशन लगाएंगे, सेम ऑपरेशन विल बी अप्लाइड ओनली इन दिस यूनिट मैट्रिक्स आई। इस यूनिट मैट्रिक्स आई में लगाएंगे, ए को हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, we'll write this A as it is, no change in writing in this A. Whatever operation we are using on this left hand side, इस left hand side में जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, same operation we will use in right hand side, but that operation will be used only in this unit matrix A. इस A में यूज होगा, sorry इस I में यूज होगा, not A. That operation will be used only in this unit matrix I. जो हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, अगर हमने रो का ऑपरेशन लगाया है तो पूरा हमको रो का ऑपरेशन ही लगाना है। डिफरेंट स्टेप्स आएंगे इसमें, जो भी हम करेंगे एज पर द गिवन क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, फॉर दिस कॉलम में देखिए, जो ऑपरेशन दिस लेफ्ट हैंड साइड इज राइट, व्हाटएवर ऑपरेशन वी आर यूजिंग इन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स A, that operation we have to use in this unit matrix I. इसमें लगाना है, this A will come as it is, ये A ऐसे ही ऐसे लिखते चले जाएंगे। जो आपको क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज में सॉल्व करने हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। सपोज हमने ऑपरेशंस लगाए, ऑपरेशन लगाने को हमें ना, ये जो I है, the I which is on right hand side, this I we have to bring here in place of this by using different operations यूज करके। ये जो I है ये हमको इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। सपोज आप हमने ऑपरेशन को लगा दिया ऑन बोथ द साइड, ऑपरेशन यूज किया, एंड दिस I changes to B here, and this is A, and this A changes to I here. Now it becomes in this form, I is equal to BA. Try to understand. As soon as you get value of I here, जैसे आपको I यहाँ मिल जाए, क्योंकि यहाँ हमने अगर 2 into 2 ऑर्डर कर लिया तो यहाँ पर I हमको 2 into 2 ऑर्डर की मिलेगी। If the matrix A is of 3 into 3 order, then definitely I will be also of 3 into 3 order. तब I भी 3 into 3 ऑर्डर होगा, और ये I हमको कहाँ लेके आना है? Using different properties, means different operations से यूज करके दिस I we have to bring on this left hand side. बस हमारा आंसर आ गया। We are getting our inverse. We will say here B is the inverse of A. This B is the inverse of A, and we write B is equal to A inverse. That means in place of B we are writing A inverse. So A inverse into A is equal to I. ये प्रॉपर्टी है, A inverse into A और A into A inverse, both of them are equal, they will be equal to I. अब देखिए, जो मैं इसका आंसर में ऑपरेशंस जो भी यूज किए हैं, whether they are correct or not, if you are having any mistake, that means it will not be equal to I के इक्वल नहीं आएगा। फिर इन दोनों को if you are multiplying inverse with this matrix A, if its value is equal to I, that means your inverse is correct. जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू जो है हमने लिखा B is equal to, यहाँ पे यानी A inverse into A। Try to understand. इस A के साथ जो यहाँ वैल्यू लिखी होगी, जो मैट्रिक्स लिखा होगा, that will be its inverse. If you multiply A, जो आपका A मैट्रिक्स है, जो आपकी स्टार्टिंग में A मैट्रिक्स आपने लिया है, if you multiply with this A inverse का आप A से मल्टीप्लाई करेंगे, and that must be equal to I के इक्वल होना चाहिए। While doing this whole row operation if you are following, that means till starting to end you will use only row operation. आप सारा ऑपरेशन जो करेंगे रोज में करेंगे, ये नहीं कि आपने एक रो में कर लिया, दूसरा कॉलम में कर लिया, फिर रो में कर लिया 2 ऑपरेशन, फिर कॉलम में कर लिया, नॉट लाइक दैट। If you are doing like this,
your method is not correct, because there are only two types of operation. Number one, row operation, and number second, column operation. If we are using a column operation, that means till we are not getting on this LHS, this RHS. Try to understand. This is LHS and this is RHS. Means we have to use in this whole only column operation, means column method. We have to use column operations, we have to use. This I, same procedure, this I we have to bring on LHS side. Operations लगा के हमें ये I की वैल्यू इधर लेके आनी है. This A will be here and we write here further B. A is the inverse of B here. Now see, try to understand. ये जो I है, ये I हम इधर ले आएंगे, ये A as it is लिखते जाएंगे. जैसे हमारे पास I यहां आ जाएगा, वैसे ही हम रुक जाएंगे. Will not move further because our answer is there. तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा और वही हमारा जो है A इनवर्स होगा, क्योंकि इस A को एज इट इज लिखेंगे. I will change its value. सपोज हमने आपने लिख दिया B, तो B यहां पे लिखा है, तो इसमें ध्यान समझे आप. ऑपरेशंस वी आर यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस हियर. कॉलम ऑपरेशन हमने यूज किए और ये I ऑटोमेटिक चेंज हो गया. A चेंज हो जाएगा I में, और यहाँ पे A इंटू हमने लिखा है यहाँ पे B. ये I चेंज हो गया B में. This I changes into B. ये A स्क्वायर इनवर्स ऑफ B. तो A स्क्वायर इनवर्स ऑफ B. अब यहां पर जो हमारे पास आ गई वैल्यू, वट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग हियर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इनवर्स. ये जो वैल्यू होगी ये इनवर्स होगी, क्योंकि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I. यहां पे क्या था, यहां पे था A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हियर दिस B will be equal to A inverse. Now try to understand. तो अब आप ध्यान समझिए कि हमको क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू, कि इसमें भी यहां पे हमें LHS में भी हमको I लेके आना है कॉलम मेथड में. RHS में भी हमको इस I को रिप्लेस करना है. A as it is लेके आना है इन कॉलम मेथड. एंड इन रो मेथड ऑल्सो A जो यहां लिखा हुआ इसको हमें किसमें रिप्लेस करना है, बाय यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस I में. ये I को किसमें रिप्लेस करना है, इनवर्स में, क्योंकि ये I चेंज हो जाएगा. जिसमें हमने B बोला है, B कुछ नहीं है, B इज नथिंग बट इट्स इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A. B कुछ नहीं है, वो जो मैट्रिक्स A जिसका इनवर्स निकालना वो वैल्यू है. यहां पर भी ये B कुछ नहीं है, जो इनवर्स निकाल रहे हैं, जो इसका आंसर होगा वो वैल्यू यहां पर है. सो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. कॉलम वाले में हमको कॉलम ही यूज करने ऑपरेशंस में. जो ऑपरेशन जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो कॉलम में ही करेंगे पूरे, जब तक टिल वी आर नॉट गेटिंग दिस यूनिट मैट्रिक्स. एंड इन दिस रो ऑपरेशन, operations among the rows, between the rows, still we are not getting on LHS I. जब तक लगना. अगर इस केस में देखिए, मैंने अभी जस्ट बोला, अगर इस केस में किसी कोई पार्टिकुलर रो में ऑपरेशन लगाने के बाद आपको कहीं अगर 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से 0 मिल जाते हैं, किसी पार्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स उसके 0 हो जाते हैं, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. इन दिस केस ऑल्सो कॉलम में मिल जाए आपको सारे एलिमेंट 0, किसी भी कॉलम के हो, किसी भी रो के हो. अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है, एक कॉलम के या एक रो के, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ लिसन, इसी पर एक है, इफ A and B are two matrices their product exists, तो A B का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स
inverse into A inverse. When we are discussing transpose of a matrix, then I have told you AB का whole transpose is equal to B transpose into A transpose. Reversal law बताया था. Same here, AB का whole inverse. If A and B both of them multiply here, तो पहले AB निकालेंगे, multiply करेंगे, multiply करने के बाद उसका inverse निकालेंगे, यहाँ B inverse निकालेंगे, A inverse निकालेंगे. That means AB का whole inverse is equal to B inverse into A inverse. ये सोचिए आप ध्यान से. तो ये एक प्रॉपर्टी मिली हमको, मतलब जो है. Now listen. So here I think that this row transformation is clear to you, and here this now column transformation is clear to you. Out of this you can use anyone. इसमें एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बहुत important topic. It's very important from examination point of view. Using elementary transformation, questions like this. Using elementary transformation, find the inverse of the matrix. Elementary transformation, now it depends upon you. You can use either row operation or column operation. कोई लोग ये mention नहीं करते using row operation. They are not writing like this in board exams. Or using column operation. They are writing only using elementary operation. Using elementary transformation, find the inverse of the given matrix. It's very important from examination point of view. Now regarding exercise, that exercise we will discuss in next video. From starting to end. In next video I will give all the questions, all the solutions of exercise 3.4. Now I hope that it's clear to everybody what are the properties, what is column method, column transformation method, what is row transformation, and how we make interchanges. Everything I made it clear. Now hope that it's clear to everybody. So revise this topic, then we'll come to next. It's exercise 3.4. That is using elementary transformation, find its inverse. Then I will tell you some trick also, so that you can solve all the questions very easily. Now, thanks a lot for your cooperation.